Assalamu alaikum. This is your English teacher, Miss Mehak Fatma from Sir Syed Children's Academy. This is your first lecture of English language of grade 6. And this lecture is all about comprehension. I know my student loves comprehension, so let's do it together. Come on, take out your book, Grammar 3-6, page number 178. And you know what? The topic is very interesting. A very odd dream. So here our passage begins. Anthea woke in the morning from a very real sort of dream, in which she was walking in the zoological gardens on a pouring wet day without any umbrella. The animals seemed desperately unhappy because of the rain and were all growling gloomily. When she awoke, both the growling and the rain went on just the same. The growling was the heavy, regular breathing of her sister Jane, who had a slightly cold and was still asleep. The rain fell in slow drops onto Anthea's face from the wet corner of a bath towel, which was her brother Roberts was gently squeezing the water out of to wake her up, as he now explained. This passage is all about siblings in which they had dreams. Okay, so Anthea was a girl who woke in the morning and she just saw a real sort of dream. बिल्कुल असली जैसा ड्रीम उसने देखा था. What was in the dream? In the dream it was कि वो एक गार्डन में है. zoological garden means zoo garden. और वहाँ पे वो एक zoo garden में है जहाँ पे उसके ऊपर रेन वाटर आ रहा है and she has no umbrella there. अच्छा, जैसे ही वो रेन वाटर देखती है, इतने में वो देखती है कि एनिमल्स आर डेस्परेटली अनहैप्पी. डेस्परेटली मतलब बहुत एक्सट्रीम डिग्री पे कोई काम हो रहा है, यानी वो बिल्कुल भी उनको वो रेन पसंद नहीं आ रही थी. एंड दे वर ऑल ग्रोलिंग ग्लूमली. ग्रोलिंग क्या होता है आपके पास? ग्रोलिंग का मतलब होता है टू मर्मर. मर्मर क्या होता है? मतलब मुंह ही मुंह में बड़बड़ाना, इफ यू कैन से इन अ इजी वर्ड्स. एंड व्हाट इज ग्लूमली? ग्लूमली मीन्स upset sad, which means कि जो animals थे they all were growling, they all were मतलब वो अपने ही आप में बातें कर रहे थे in a very sad mood. जैसे ही वो ये देखती है वो उठ जाती है. जब वो उठती है तो what she saw कि उसकी जो murmur का sound था, जो growling sound था, and that drops of rain, they both were there but in a different context. कैसे? वो जो murmur का growling का sound था that was coming from her sister Jane, जिनको थोड़ा सा slightly cold था, and जो वो drops थे, slow drops of rain थे, that was because her brother was squeezing his bath towel on her face. After that what happened? Oh, drop it, she said crossly. So he did, for he was not a brutal brother. I had such a funny dream, Anthea began. जैसे ही वो आँख खोलती है वो अपने भाई से कहती है please drop it. Crossly means ill-natured. ill-natured manner किसको कहते हैं? चिड़चिड़ेपन को. ठीक है, तो वो से नींद में उठ के कहती है please उसे फेंक दो. And as his brother was not a brutal brother, brutal मतलब जालिम, cruel brother, तो उसने भी फौरन से वो टावल फेंक दिया. और जैसे उसने टावल फेंका, एंथिया बहुत एक्साइटेडली कहती है कि मैंने एक बहुत फनी ड्रीम देखा है. So did I, said Jane, waking up suddenly and without a warning. I dreamed we found a sand fairy in the gravel pits, and it said it was a Samian, and we might have a new wish every day. But that's what I dreamed, said Robert. I was just going to tell you, and we had the first wish as soon as it said so. And I dreamed you girls were donkey enough to ask for us all to be beautiful as the day, and we jolly well were, and it was perfectly beastly. जैसे ही एंथिया ने ये कहा कि मैंने एक बहुत फनी ड्रीम देखा है जेन,
फौरन से शी सेड ऑल्सो कि मैंने भी एक फनी सा ड्रीम देखा है, मैंने देखा है ड्रीम में कि हमें एक सैंड फेरी मिलती है एंड इन द ग्रेवल पिट्स किसको कहते हैं? दैट वाज ऑफ स्टोन्स क्वेरीज, मतलब स्टोन्स की पिट थी एंड वी माइट हैव एंड शी सेड कि हम एक न्यू विश डेली मांग सकते हैं। जैसे ये बात जेन ने कही, रॉबर्ट ने फौरन से कहा मैंने भी तो यही ड्रीम में देखा है। आई जस्ट गोइंग टू टेल यू, मैं बस बताने ही वाला था तुम लोगों को। एंड यू नो व्हाट, मैंने तो ये भी देखा कि तुम लोगों ने, मतलब हम तीनों ने, हम सब ने एक विश उससे मांग भी ली एंड दैट वाज कि हमें बहुत खूबसूरत बना दो। Jolly means happy, cheerful, and beastly means very unpleasant. But can different people all dream the same thing? Said Anthea sitting up in bed. Because I dreamed all that as well as about the zoo and the rain and the servants shut us out of the house because the radiance of our beauty was such a complete disgust. And जैसे ये बात हुई, रॉबर्ट ने कहा, इतने में एंथिया ने कहा क्या सारे लोग एक जैसे ड्रीम देख सकते हैं? मैंने भी तो यही सब कुछ देखा है, that I dream that we all are in zoo and we all dreamed about the same thing and servant shut us out of the house because the radiance of our beauty, हमारी जो beauty की radiance थी, radiance हमारी beauty पे, radiance means light or heat reflected by something, was such a complete disgust. वो कहती है कि मैंने भी तो यही सब कुछ देखा कि जो हमारी ब्यूटी थी वो डिस्गस हो गई थी। डिस्गाइज मतलब चेंज हो जाना, आइडेंटिटी इतनी चेंज हो जाना कि हमारी आइडेंटिटी ही चेंज हो जाए, जिसको इफ आई टेल यू इन इजी वर्ड्स मीन्स भेस बदलना, जो कि किससे रिफ्लेक्ट हुए? किसी लाइट और हीट से रिफ्लेक्टेड, लाइट और हीट किसी चीज से रिफ्लेक्ट होकर हमारे फेस पर आ रही थी। Cyril appeared in the doorway, partially clothed. Look here, said Anthea. We've all had such an odd dream. We've all dreamed about a sand fairy, found a sand fairy. Her voice died away before Cyril's contemptuous glance. Dream? He said. You little sillies, it's true. I tell you, it all happened. जैसे उसने ये कहने ही वाली थी कि इतने में कोई डोर से अपीयर हुआ, कोई दरवाजे से अंदर आया एंड दैट वाज कायरल। जैसे ही कायरल को देखे एंथिया ने फौरन से कहा देखो हम सब ने एक जैसा ड्रीम देखा है। ये कहते हुए उसकी आवाज जाने लगी एज इट वाज कायरल्स कंटेम्प्चुअस ग्लेंस। कंटेम्प्चुअस के क्या मतलब होता है? मतलब किसी को बहुत डिसरिस्पेक्टफुली देखना, बहुत नीचा या हकीर करके देखना, ठीक है। वो उससे कहता है कि ड्रीम, ओह लिटिल सिलीज, इट्स ट्रू, ये कोई ड्रीम नहीं था, ये सब कुछ हुआ है, इट ऑल हैपेंड। That's why I'm so keen on being down early. We'll go up there immediately after breakfast and have another wish. Only we'll make up our minds solid before we go. What it is we do want, and no one must ask for anything unless the others agree first. No more fearless beauties for this child. Thank you. जैसे उसने ये कहा कि मैंने, ये कोई ड्रीम नहीं है, ये इट रियली हैपेंड, ये सब कुछ हुआ है और मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ ताकि हम फौरन से ब्रेकफास्ट के बाद वहाँ तक जा सकें। एंड मस्ट रिमेंबर वन थिंग कि वी ऑल विल जस्ट विश वन सिमिलर थिंग। हम सब लोग एक चीज़ मिल के मांगेंगे और कोई फजूल, अनलेस कोई फजूल चीज़ नहीं मांगेगा। एवरीवन एग्रीड टू दैट, ठीक है। पियरलेस का क्या मतलब होता है? पियरलेस मीन्स मैचलेस होना, मतलब उसका कोई मैच नहीं होना। The other three dressed with their mouths open if all that dream about the sand fairy was real. This real dressing seemed very like a dream. The girls thought as they went, they decided on the wish they would ask for.
Although they were all in great hurry, they did not try to climb down the sides of the gravel pit, but went round by the safe lower road as if they had been carts. They had made a ring of stones round the place where the sand fairy had disappeared, so they easily found the spot. The sun was burning and bright, and the sky was deep blue without a cloud. The sand was very hot to touch. ये कह के दे सब लोग दे गेट रेडी एंड दे वेंट आउटसाइड आफ्टर देयर ब्रेकफास्ट. वो जैसे ही इतना जल्दी में थे दे वेंट टू द सैंड फेरी कि जहाँ उन्होंने अपने ड्रीम में स्पॉट किया था कि यस देयर सैंड फेरी वाज. दे वेंट देयर. ग्रेवल पिट्स के अंदर जाने से बेहतर उन्होंने समझा कि दे शुड स्टैंड साइड्स ऑफ द ग्रेवल पिट्स, और वहाँ पे वो सेफली लोअर रोड पे खड़े थे. दे मेड अ रिंग ऑफ स्टोन्स. व्हाई दे डिड दैट? ताकि वो जहाँ पे वो सैंड फेरी डिसअपियर हुई थी वो उस जगह को इजीली स्पॉट कर सकें, उस जगह को इजीली जान सके, पहचान सकें. द सन, जो सन था, दैट वाज बर्निंग अ लॉट ब्राइट एंड वेरी हार्शली. दैट स्काई वाज deep blue without a cloud. जो ज़मीन थी, the sand was hot to touch. उस वक्त वो ज़मीन बहुत गर्म हो चुकी थी. So they did look out, dig with your hands now, said Robert. Robert ने जल्दी से कहा, देखो जल्दी से dig करो अपने hand से. dig करना मतलब खोदना. So they did, and presently uncovered the spider-shaped brown hairy body, long arms and legs, bat's hair and snail's eyes of the sand fairy himself. Everyone drew a deep breath of satisfaction, for now of course it couldn't have been a dream. जैसे ही उन्होंने ये देखा, डिग करना शुरू किया अपने हैंड से, उन्होंने देखा कि स्पाइडर शेप ब्राउन हेयरी बॉडी उनके सामने है, जिसके बहुत लॉन्ग आर्म्स हैं, लेग्स हैं, बैट्स के जैसे ईयर्स हैं, स्नेल्स की जैसी आंखें हैं, एंड दैट वाज एक्चुअली अ सैंड फेरी. उन्होंने एक गहरी सांस ली ऑफ सेटिस्फैक्शन कि यस, वो कोई ड्रीम नहीं था, इट वाज ऑल अबाउट एक्चुअल. Hope you love this passage, and it was adapted from Edith Nesbit's 5 Children in It. Okay, so I hope you understand and enjoy the comprehension. So here your home task is, you have to do your work according to the given instructions. Make a proper title page of comprehension, a very odd dream. Write properly date, heading and questions in your copy. Do exercise A and D in your English language copy, and do exercise B and C in your grammar tree, page number 179 and 180. First of all, this is your copy page. You have to write date and make title page of comprehension like this. After that, you have to do exercise A in your copy, which is page number 179. What you have to do is use the following words from the passage to make sentences of your own and bring out the meaning of the words. You may use a dictionary for your help. आपके पास 6 वर्ड्स लिखे हैं जो आपको जिनके मीनिंग्स आप डिक्शनरी से ढूंढ सकते हैं. I have done this exercise for you, but I would appreciate कि अगर आप खुद से इसे करने की कोशिश करें. Find the meanings from the dictionary and then write sentences. Do not write meanings. If you want, अगर आप चाहते हैं कि अपनी आसानी के लिए लिखें तो लिख लीजिए. Otherwise, just write the sentences with the help of the meanings. ठीक है? The first word is growling. Growling means, as I told you in the passage, it's kind of a guttural noise made in the throat. या आप कह लें to murmur. Murmur का क्या मतलब होता है? मतलब मुंह ही मुंह में बात करना. जैसे यूजुअली ये चीज़ डॉग करते हैं. They used to murmur. They used to make guttural sounds.
ठीक है, here I have written one sentence for you. Hearing that growling was so scary, यानी वो जो dog की growling थी उसको सुनना बहुत डरावनी था. The second word is crossly, which means in an ill-natured manner. As I told you in the passage, ill-natured manner मतलब चिड़चिड़ा होना. ठीक है. She looked at her husband crossly. Disgust, which means give someone or oneself a different appearance in order to conceal one's identity. इसको आसान मीनिंग में अगर मैं आपको समझाऊं तो it means भेस बदलना, यानी अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर देना, उसे तब्दील करना. ठीक है. We took elaborate measures to disguise ourselves as locals. Okay. Contemptuous, which means फीलिंग और एक्सप्रेसिंग डीप हेट्रेड और डिसअप्रूवल, यानी ऐसी फीलिंग और ऐसा एक्सप्रेस करना कि आप इस बात से डिसएग्री करते हो. शी वॉज इंटॉलरेंट एंड कॉन्टेम्प्चुअस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन रेस. ओके. पियरलेस, हैविंग नो इक्वल, मैचलेस, अनरिवेल्ड. क्या मतलब होता है, यानी इसके बराबर कोई भी नहीं है. द पियरलेस बॉक्सर नेवर लूजेस अ फाइट. इसके बाद okay, so exercise B you have to do in your book, page number 179. How you will do it, आपके पास words लिखे हुए and what you have to do is find antonyms of the following words or expressions in the passage. आपको इन words के antonyms लिखने हैं, इन passage में जो words दिए हुए इनके antonyms लिखने हैं. ठीक है. आपके पास इस तरह का एक काइंड ऑफ अ टेबल बना हुआ है. आपने बस उस वर्ड के नीचे उसके इंटरनियम्स लिख देने हैं. इंटरनियम्स क्या होते हैं, ऑपोजिट्स होते हैं. सो ग्लूमली का ऑपोजिट क्या होगा, ब्राइटली. रेगुलर का ऑपोजिट इरेगुलर. कॉन्टेम्प्चुअस का ऑपोजिट एडमायरिंग. वेकनिंग का ऑपोजिट स्लीपिंग. अ पोरिंग वेट डे का ऑपोजिट अ फाइन ड्राई डे. ठीक है. इसके बाद आप करेंगे एक्सरसाइज सी इन योर बुक, पेज नंबर 180. What you have to do is read the sentences and just write true or false. If it is true, write true. If it is false, just write false. आपको सेंटेंस के आगे ट्रू लिखना है अगर वह सेंटेंस ट्रू है, और अगर फॉल्स है तो उसे फॉल्स लिखना है. कोशिश कीजिएगा कि ये काम भी खुद से करें. अगर नहीं हो सके so you can take help from your teacher's work. The animals were unhappy as it was raining. Remember in the first para we read it. So yes, it is true. The rain poured heavily down on Anthea's face. क्या वो heavily down pour हो रहा था? नहीं, वो तो slowly drop down हो रहा था. So it means this sentence is false. The children found the sand fairy. Is it true कि children ने क्या found किया था, sand fairy को? Yes, it is. They had so many different dreams that they were confused. उन्होंने इतने सारे dreams देखे थे कि वो confused हो गए थे. Which is false. They decided to ask the sand fairy to grant each on their different wishes. उन्होंने क्या decide किया था कि वो सबकी अलग-अलग wishes के ऊपर sand fairy से request करेंगे. तो क्या ऐसा था? नहीं. It means this one is also false. Okay, so exercise D, which you will do in your copy. You have to copy down the questions and then write answers. ठीक है. Try to do it by yourself. If you cannot, then use these answers for your help. ठीक है. The first sentence is, where was the rain falling on Anthea's face actually coming from? कहाँ से एंथिया के फेस पे असल में पानी आ रहा था. रिमेंबर वो जो उसके भाई ने एक वेट टावल, बाथ टावल वहाँ पे सुखा दिया था, स्क्वीज कर रहा था. फ्रॉम देयर एंथिया के फेस पे रेन वाटर आ रहा था. सेकेंड क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द रोबोट, what was the first wish which the sand fairy had granted the children in the dream? अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा फर्स्ट विश था जो सेंट फेरी से उन्होंने मांगा था ड्रीम में? एंड दैट वाज कि वो चाहते थे वो बहुत खूबसूरत हो जाए, एंड वो विश पूरी हो गई थी. द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द कार्ल सजेस्ट दे शुड ऑल डू? क्या सजेस्ट किया था कार्ल ने? ही सजेस्टेड कि हम सैंड फेरी के पास इमीडिएटली जाएंगे, अभी अभी जाएंगे बस नाश्ता करने के बाद, एंड सब मिलके एक ही विश मांगेंगे.
इसके बाद the fourth question is, how could the children easily identify the spot where they had seen the sand fairy in the dream? फोर्थ क्वेश्चन आपके पास ये है कि किस तरह से बच्चे आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस जगह सैंड फेरी हमें दिखी थी ड्रीम में। इसका आंसर इतना सिंपल है कि उन बच्चों ने उस जगह के ऊपर स्टोन्स के रिंग बना लिए थे सो दैट दे कैन फाइंड सैंड फेरी इजीली। कहाँ रिंग बनाया था? जहाँ सैंड फेरी एक्चुअली में उनके ड्रीम में डिसअपियर हुई थी, ताकि वो उस स्पॉट को आसानी से ढूंढ सकें। Thank you students, here your comprehension and the question answers ends. Hope you like it. Once again I'm saying कि try to do these exercises by yourself, ठीक है? Hope you like this video, so don't forget to like, share and subscribe the channel.